नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विद कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स किक स्टार्ट टुडेज वीडियो। एज यूजुअल, आई वुड like to start this video with the beautiful lines which read, sometimes the weight we want to lose is not on our body but in our mind. All of you know that अगर कोई टॉक्सिक थॉट या कोई टॉक्सिक इमोशन एक समय से ज़्यादा अगर आपके माइंड में रह जाती हैं तो उसका जो वेट होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बियर। एंड उसका इम्पैक्ट जो होता है जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर होता है। So today's video is all about the mental health. I will talk about the 7 pillars of mental health which will help you a lot in developing your mental health, and subsequently if you developed your mental health, subsequently it will help you to develop your physical health and as well as each and everything related to your domain of your life. Before that, I would like to tell you this is the movements before some days, like in the month of December, if I'm not wrong, I conducted one session in the Meritorious School. On the and the topic for that session was that was a seminar. The topic for that seminar was psychology of learning, different tools I explained over there. So it was a great movement, and that movement itself enriched my experience of life. Now let's see the what are the pillars of mental health. Now, according to Lord Buddha, there are two types of illness. First is your physical illness, and second is your mental illness. Now, when it comes to physical illness, there are 1 to million metrics to measure the physical illness. इसका मतलब अगर आपको कोई physical illness होता है, तो you can easily see it. It's visible with the naked eyes, and there are a lot of treatments available in the outside world. But when it comes to mental health, there is a zero to negligible instrument to measure the mental health or the amount of pressure a student or in a day-to-day life a normal human being feels. That's why, and there is no external agency, there is no authentic external agency which can provide the guidance regarding mental health and all those things. Now, so the why there is a importance of mental health, मैं बोल रहा हूँ इसलिए है क्या? No, 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 absolutely not, because I'll show you the entire rationality and the logic behind whatever I'm trying to convey over here. Now, this was the report of the WHO का report आया था. According to WHO's report, mental illness may be turning into a bigger crisis than a COVID-19 ने जितनी तबाही मचाई थी उससे कहीं ज्यादा तबाही मचाने का काम एक मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल पैंडेमिक कर सकता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट आया था. So the thing is, uh, all of us know, you can go through this entire report. Working women and working women, age people are more susceptible or vulnerable to the different mental disorders. Anxiety, depression, these are the most common mental disorders. In fact, I would like to tell you that back in 2015, I myself was diagnosed with a disorder and multiple psychological conditions. So I understand how much tough it is to get through all those things. There were certain incidences happened in my life back in 2015. I lost my mom, and due to excessive attachment with the result and the future were the main reason behind my depression. And when I talk about when I'm saying depression, I don't want to imply जो normal हम depression बोलते हैं. I was diagnosed with the clinical depression and multiple psychological condition, but not any medicine or any doctor helped me. I approached many psychiatrists and all those things, but the knowledge I got through the books and the different website and different things helped me to overcome all those things. And those are the pillars, those are the things which helped me to conquer my own mental health and my own mental disorders and help me to live a life to the fullest. uh, so this mental pillars I am about to talk over here. Now there are again there are different statistics which prove that there is an importance. There are a lot of work need to be done when it comes to the area of mental health. You can see this is a United Nation का report है. India is not happy
अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। इंडिया का रैंक अगर हम देखें तो इंडिया का रैंक ऑलमोस्ट 126 नंबर पे आता है। पाकिस्तान भी हमसे खुश है मोस्ट ऑफ द टाइम। सी जस्ट चेक इट आउट, Vietnam, all these Nepal, these small countries are much happier when it compares to India. Actually इंडिया में सबसे ज़्यादा दुखी आत्मा वाले लोग रहते हैं, ऐसा दिस रिपोर्ट बोलता है। And all of you see, day in and day out, we came across a different digital media or the print media. We came across a different news which says that IIT people, people from to prepare, people who are preparing for different competitive examinations, those are committing suicides on a large number of large number of quantities. So why this is happening? It's only because कि जो लोग होते हैं उसका mental training नहीं होता है। लाइफ का जो प्रेशर है, लाइफ व्हेन लाइफ स्क्वीजेस पीपल, पीपल कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस, एंड दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड कमिटिंग सुसाइड एंड ऑल दस थिंग्स। अगर हम हमारे माइंड को ट्रेन करें तो ये चीज़ें हम बहुत आसानी से रोक सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ आई कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। So the first pillar, that is your sleep. I talked a lot about sleep in different videos. Sleep, again I am talking about this. Sleep is a non-negotiable thing. अगर आप ऐसा सोचते हो कि it is a negotiable thing और weekend activity जब आए ली तो चलेगा, नहीं ली तो नहीं चलेगा, that's not going to work. अगर आपकी इच्छा हो तो आप सोओगे, काम हो तो नहीं सोओगे, नो नो नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप अच्छा सोचते हो, लिटरली आई एम टेलिंग यू, you are playing with your own mental health and as well as physical health। एक या दो दिन पे इसका impact आपको दिखेगा नहीं, but in long term definitely you will see its impact getting manifested in your mental health as well as on your physical health। So sleep, recommended hours of sleep is 8 hours. You can take from 7.5 hours to 8 hours. These are the recommended hours for the sleep. So this is non-negotiable thing। In fact, if you are a student, अगर आप एक student हो तो बेटे आपके लिए ये नॉन निगोशिएबल है। इनफैक्ट इट इज नॉन निगोशियल फॉर ईच एंड एवरीवन। बट स्लीप प्लेज अ पाइवाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट द आयरनी इज, इसका इंपॉर्टेंस ही लोगों को पता नहीं है। स्टूडेंट रात भर जगते हैं पढ़ाई करने के लिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुअली गलती भी उनकी नहीं है क्योंकि सिस्टम में इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट। So make sure that if you are watching this video, take your sleep seriously because it is not a non-negotiable thing। Second thing is nothing but the meditation। I talked about the meditation in details also. There is a video called basics of life, basics of healthy and happy life। You can go over there, part 2 या part 3 में आपको मिलेगा कि why everyone should do the meditation। Actually I have already told you the mind and body which the mind and body which has been designed by the nature, it hasn't been designed to live in the 21st century। It has been designed to live in a hunter gatherer society। हमारे जो पूर्वज जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में रहने के लिए ये चीज हमारी माइंड और बॉडी बनाया गया है। बट आज का जो लाइफस्टाइल है विच इज, इट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू द यूसेज एंड द पर्पस। मतलब जिस चीज के लिए हम बने हैं और जिस चीज के लिए हम हमारे बॉडी और माइंड का आज यूज कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज गैप, देयर इज अ गल्फ बिटवीन यूसेज एंड द पर्पस। एंड वो गैप अगर आपको फील करना है तो यू डोंट हैव एनी चॉइस but to meditate। And trust me, this is the most transformative thing you can do to change yourself। So meditation, sleep and exercise, these are non-negotiable things। Third pillar is sunlight। In fact, if you go into the details of the meditation and the Buddhist literature, you will understand that, and psychological literature में भी आप जैसे डिटेल में जाओगे, you will understand that at the most fundamental level, we are nothing but the vibrations। we are nothing but the vibration and energy। हम मोस्ट ऑफ द हम नेचर से जुड़े नहीं है। इनफैक्ट हम ही नेचर है। नेचर लाइज इनसाइड अस। So in fact there is nothing called inside and outside, everything is the consciousness। So I will not go into much detail, but सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, there is a life hack today I am giving you, and that is nothing but, if you, the more you stay close into the nature, the more you time you spend into the lap of the nature,
द मोर यू विल लिव। मतलब जितना आप नेचर में अपना समय बिताओगे उतना ही लंबी जिंदगी और खुशी की जिंदगी आप जी सकते हो। आपको जरूरी नहीं है, यू डोंट नीड टू स्टे इन बंगलो और समथिंग लाइक दैट, बट इफ यू स्टे इन अ नेचर, trust me, there are tons of data which are present in the research paper and psychology and neuroscience. Number of statistics shows that spending time in sunlight, spending time in nature is the most transformative thing you can do in a day for yourself. Now sunlight जो है, इट्स वेरी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। आज आजकल के जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे वाइड स्प्रेड जो इंसोम्निया करके एक चीज होता है, इंसोम्निया इज नथिंग बट यू कांट फॉल अस्लीप, नॉर्मली आपको नींद नहीं आती है। एक समय था जब लोगों को गहरी नींद आती थी, आज गहरी नींद आना भी एक रेयर चीज हो गई है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि कितना बदलते समय के साथ चीजें बदलती जा रही हैं। नाउ इंसोम्निया का मेन रीजन होता है कि लैक ऑफ सनलाइट। अगर आपको इफ यू फील प्रॉब्लम इन स्लीपिंग, द बेस्ट थिंग यू कैन डू, अगर आपको प्रॉब्लम इंसोम्निया का है या नहीं भी है, but still हो या ना हो, everyone should get into the sunlight in the morning. Not only in the morning, throughout the day you should take the sunlight in your eyes as much as you can. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंड मेंटल हेल्थ का सीधा इम्पैक्ट होता है आपके फिजिकल हेल्थ पे, बिकॉज दिस इज द सीपीयू। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपका फिजिकल हेल्थ भी नो ठीक नहीं होगा। तो मेक श्योर दैट यू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट एज मच एज यू कैन इन योर आईज। सो मेक जब सनलाइट, जब व्हेन सन इज देयर, ऑल यू नीड टू डू इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द जिस डायरेक्शन में सन सन है, उस डायरेक्शन में आपको 10 से 15 मिनट सिर्फ खड़ा रहना है। एंड व्हेन देयर इज अ क्लाउडी वेदर, इसका मतलब इट डजंट मीन दैट सन इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, सन इज ऑलवेज देयर। द ओनली थिंग इज दैट व्हेन देयर इज अ क्लाउडी वेदर, जब बादल वगैरह आते हैं, वो समय आपको सिर्फ क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक बाहर खड़ा रहना है। उस समय में जो सनलाइट आपके आईज थ्रू जाता है एंड इट इम्पैक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इट हेल्प यू in retaining your mental health and improving your mental health. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सनलाइट का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। मेक श्योर दैट यू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट एज मच एज यू कैन थ्रू आउट द डे। Now, next is I was recently going through the research paper that was published in Nature Mental Health, which was a journal, and in this research paper, it was given that irrespective of the time you spend in the sunlight, मतलब sunlight में आप कितना time spend कर रहे हो, इसको छोड़ के amount of time you spend in the darkness, it is also importance for your mental health. Now this is what I am trying to convey। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि रात को, that's why रात को अगर आप लाइट बंद करके सोते हो तो it is very good for your mental health। इट्स दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोलते हैं कि रात को लाइट बंद के अगर आप सोओगे तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी, एंड इट्स वेरी ट्रू। सो इसका भी इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू आर, जब कभी नाइट व्हेन द सन इज मेल्टिंग डाउन and when it is getting night, at that time make sure that you stay away from the sun, you stay away from a bright light। जो भी bright light होता है उससे दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ब्राइट लाइट आपका मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होने देता है। मेलाटोनिन इज नथिंग बट योर स्लीप हार्मोन। अगर मेलाटोनिन नहीं होगा तो स्लीप नहीं होगा। तो ब्राइट लाइट से दूर रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द नाइट टाइम। तो irrespective of sunlight, whatever exposure of the sunlight in a day, you need to spend at least 7 to 8 hours in the darkness। so darkness में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो उसके ऊपर भी आपका मेंटल हेल्थ बेस है। Nowadays I know that, and you also know that, most of the people use cell phone in this condition। मतलब सोते टाइम लाइट, पूरा लाइट ऑफ करके हम मोबाइल यूसेज करते हैं। ट्रस्ट मी, इफ यू आर डूइंग इट, you are doing the most what we can say the difficult thing for you। you are making, you are digging a grave for yourself। अगर ऐसा करते हो तो आप खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो when it comes to the mental health। so don't इनफैक्ट देर वॉज अ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का एक रिसर्च पेपर आया था जिसमें मैं पढ़ रहा था, एंड इट वाज गिवन ओवर देयर, स्मॉल एक्सपोजर ऑफ लाइट ड्यूरिंग स्लीपिंग डिसरप्ट द ग्लूकोज लेवल इन द मॉर्निंग। मतलब अगर रात को, आई टोल्ड यू, डार्कनेस में रहना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सनलाइट हमें दिन में इम्पोर्टेंट होता है।
तो नाइट में अगर थोड़ा सा भी आपको लाइट एक्सपोजर मिल जाता है सोते समय, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपका ग्लूकोज लेवल पे दूसरे मॉर्निंग में, अगले मॉर्निंग में आपको दिखेगा। तो मेक श्योर दैट these two things, take sunlight as much as you can throughout the day, but जैसे ही रात होना स्टार्ट हो जाता है, stay away from the bright light से दूर रहो। And when it's time to go to bed, make sure that you switch off the light, and this is the proper procedure to keep your mental health up to date. Now the next pillar, that is nothing but the movement. When it movement is nothing but your exercise. I have already talked about these things in major details. Uh, all you need to do, just go on a video list, आपको basics of happy and healthy life का part 1 या part 3 में आपको मिल जाएगा, that why sleep, then your meditation and physical exercise are non-negotiable things. Trust me, these are non-negotiable things. इसका बहुत ज़्यादा impact आपके लाइफ में है। Our body has been designed to move. Our body hasn't been designed to stay on a to sit for a longer period of time. अगर आप एक जगह पे बहुत समय से ज़्यादा रहते हो, तो उसका सीधा impact आपके physical as well as mental health के ऊपर होता है। I will not I will not talk much about the exercise because I have made a separate video on that, to make sure that I highly recommend you to go through those videos. But recently I was going through this research, and this is a research, 2011 में आया था, 2011 में, and University of Pittsburgh से आया था। Walking 40 minutes 3 times a week has been shown to increase the size of hippocampus. Hippocampus is the part of your brain where मेमोरी का स्टोरेज होता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जितनी भी होती है वो आपकी हिप्पोकैम्पस में स्टोर की जाती है। तो आपका अगर मेमोरी वीक है, इट्स सिंपली बिकॉज हिप्पोकैम्पस आपका वीक है। ऑल यू नीड टू डू, आई टोल्ड यू दैट हिप्पोकैम्प योर फिजिकल एक्सरसाइज इज इंट्रिकेटली कनेक्टेड विथ योर लर्निंग एबिलिटीज। आप जितना फिजिकली फिट रहते हो उतना ही आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती रहती है। तो दिस इज अ थिंग, एंड दिस हैज बीन ऑलरेडी प्रूवन बाय द साइंटिफिक लिटरेचर। Another study I would like to show it to you guys. It is a nothing but study it was done in Japan. ये तो latest research है 2023 का। A new study finds that just doing a 1 minute of squatting exercise होता है squat, और it's a, अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक बैठे हो, अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब क्या होता है? जस्ट सिटिंग ऑन अ सिंगल प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लैपटॉप पे, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में, या फिर टेक कंपनी में जैसे लोग बैठते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी और मेंटल हेल्थ के ऊपर होते रहता है। अगर आप ऐसा आपका लाइफस्टाइल है, तो मेक श्योर दैट आप डेली स्क्वाट कर रहे हो। और स्क्वाट इज द नथिंग बट द बेसिक, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज स्क्वाट। इट इज बेसिकली कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस। नॉर्मल स्क्वाट करने से आपका कॉग्निटिव एंड एग्जीक्यूटिव पूरा मेंटल हेल्थ ठीक अप टू डेट रहता है। तो जो भी इम्पैक्ट होता है बैठने का, वो सारा इम्पैक्ट यू कैन compensate with doing the physical exercise. So these are the recent research which has been done on the usage of physical exercise and its impact on physical health. तो make sure that at least आप 10 से 15 मिनट डेली अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे होगा। Next is nothing but your nutrition. Most of us have heard about the physical diet. हम when it comes to the physical health, हम जिम में, अगर आप जिम में जाते हो या नहीं जाते हो, तो we take care about, we have, every one of us have heard about the physical diet, मतलब physical health को maintain करने के लिए डाइट की ज़रूरत पड़ती है। बट no one talks about the mental diet, कि mentally हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, mentally हमें क्या फिट रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स हाईली लॉजिकल इफ यू थिंक, क्योंकि ये ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक है। अगर यहाँ पे गड़बड़ है तो सारी आपको रियलिटी में गड़बड़ लगेगा। योर रियल वर्ल्ड इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉट एवर इज गोइंग इन साइड योर माइंड। इफ देर इज अ chaos inside your mind, you will feel the chaos in the real world also. So if you want to change your reality, all you need to do is change your mind. And to change your mind, you need to think about the mental diet. आपको mental diet के बारे में सोचना पड़ेगा।
and all you need to do, these are the some omega 3 essential fatty acid एक कंपाउंड होता है जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दिस इज द लिस्ट ऑफ द फूड्स विच आर, जिसमें ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड होता है. ऑल यू नीड टू डू इज कंज्यूम दिस थिंग्स. ये अगर आप कंज्यूम करते हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट and try to take it. Second is L-tyrosine. L-tyrosine is nothing but the precursor of dopamine, and dopamine is न्यू करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी. तो डोपामिन का जितना इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. डोपामिन इज नॉट ओनली द केमिकल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ द केमिकल ऑफ ड्राइव एंड मोटिवेशन एंड क्रेविंग. सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है. तो उसको अगर आपको बनाना है तो यू नीड एल टायरोसिन. एल टायरोसिन से ही ये बनता है. तो ये चीज़ें खाने से बेसिकली आपको एल टायरोसिन मिलेगा. एल टायरोसिन होगा तो आपके माइंड में डोपामिन रहेगा, एंड डोपामिन रहेगा तो आपको सारी चीज़ें ठीक दिखेगी. ओके, now next thing, this is not, no, these are the top 10 brain foods, or you can go through the list. You can pause the video and go through the list. These are highly important no, substances or food which you need to take on a daily basis in order to improve your mental health. Okay, next pillar is nothing but your social connection. Now when I am saying social connection, I need to clarify myself. जो कनेक्शन आपको सोशल मीडिया से मिलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कनेक्शन जो आप रियल वर्ल्ड में बिल्ड करते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कनेक्शन. जस्ट टॉक अबाउट, इफ यू सी अबाउट द टुडे जनरेशन, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स, 1000 फ्रेंड्स होते हैं. बट when it comes to talking something personal, हमारे पास एक भी दोस्त अवेलेबल नहीं होता है. Now this is the hard reality of today's generation and today's world, today's society. I am very lucky enough to have the friends. Whenever I came across different problems, I have someone to talk. That too, in a physical world, in a physical manner, in person I can talk. So make sure that at least you have some people are surrounded you. आपके आजू बाजू में कुछ आपके दोस्त, सोशल कनेक्शन जितना आपके स्ट्रांग रहते हैं उतना आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है. एंड सब्सिक्वेंटली आपको हर चीज़ में आपको मन लगता है, एंड यू फील कि लाइफ इज़ वर्थ लिविंग. आई विल प्रूव दिस पॉइंट. एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया था, एंड ये रिसर्च की खासियत ये है कि ये अभी तक दुनिया में हिस्ट्री में किया गया सबसे लंबा रिसर्च है. 75 ईयर्स का रिसर्च है. 724 men were tracked for the period of 75 years. You just imagine 75 years is not a short span of time. And the question of this research was, researchers were trying to find what makes a human happy. एक इंसान को खुश रहने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं. एंड इट्स वेरी बेसिक कि, and the result of this outcome of this study was, it's very simple कि a strong social connection. अगर आपके सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं तो उतना ही आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, योर एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी हेल्थ मेट्रिक्स आपका अच्छा होता है अगर आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे होते हैं. तो मेक श्योर दैट आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ाने से अच्छा है कहीं व्हाट यू कैन, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स वगैरह वगैरह बढ़ाने से कहीं अच्छा होगा कि टू गेट आउटसाइड into the real world and make a one or two true friends. That is the best thing you can do. She is Lisa Feldman Barrett. She is a very important figure when it comes to the mental health. You can go through her profile. She gave the concept of saving, tax and neutral. आप सबको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जिनको देख के ही हमें पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट होता है. जिनसे बातें कर जिनसे बात करके भी आपको काफ़ी मोटिवेटेड फील होता है, आपको काफ़ी अच्छा लगता है. सो दिस इज नथिंग बट द सेविंग. दिस आर नथिंग बट द सेविंग, इसको आप बोल सकते हो. जो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको एक्चुअली आपको पूछते हैं कि हाउ आर यू, एंड यू लिटरली फील टू आंसर दैट क्वेश्चन. बहुत कम ऐसे पूछते तो सभी है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू. मोस्ट ऑफ द टाइम हम जवाब देते हैं कि आई एम गुड, आई एम गुड. बट एवरी वन ऑफ अस नीड one person, at least 1 or 2% with whom we can share each and everything. So ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसको सेविंग्स बोला गया.
टैक्स्ड इज नथिंग बट कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अ, हर चीज में प्रॉब्लम दिखता है। बेसिकली उनके देर इज अ डिस्टॉर्शन इन देयर परसेप्शन, परसेप्शन में ही प्रॉब्लम है तो रियलिटी में प्रॉब्लम दिखेगा ही दिखेगा। तो कुछ ऐसे कनेक्शंस होंगे आपके आजू बाजू में, आपके लोग ऐसे होंगे कि जिनसे बात करके आपको ऐसे लगेगा कि मैंने इस इंसान से बात ही क्यों की, आपका पूरा दिन खराब चला जाएगा। सो इट्स बेटर टू अवॉइड सच अ टाइप ऑफ पीपल, बिकॉज ये आपका आपका जो सेविंग है उसको खत्म करने का काम करेंगे, आपके मेंटल हेल्थ पे सीधा ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। थर्ड इज नथिंग बट अ न्यूट्रल कनेक्शन। दीज आर द नॉर्मल कनेक्शन। आपको ना टैक्स्ड फील होता है, आपको ना डिमोटिवेटेड फील होता है, ना मोटिवेटेड फील होता है। दीज आर सेफ टू डू, बट मेक श्योर दैट जितना ज्यादा आप सेविंग्स की तरफ ध्यान दोगे आपके, जिससे जैसे कि ऐसे लोग जो आपको ट्रूली मोटिवेट करते हैं, उन लोगों के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द फर्स्ट रूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का पहला रूल होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हु डिजर्व्स एन एक्सप्लेनेशन, who deserves an answer, and who deserves absolutely nothing. Think over it. Now, next pillar is nothing but the stress control. Stress is something which cannot be avoided, and it's a part and parcel of the life. मतलब ये ऐसी चीज है कि जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। All you need to do is prepare for it, because trust me, it is going to hit, and whenever it will hit, it will very hard. So life will literally squeeze you at some point of time. तो make sure that जब योर स्ट्रेस का टूल किट आपके पास होना चाहिए। व्हेनेवर लाइफ विल स्क्वीज यू, जब आपको लाइफ उठा के पटक देगी, तब आपका स्ट्रेस कंट्रोल का टूल किट आपके पास होना चाहिए। सो ऑल दो चीजें हमारे पास, एक तो हमें पता होना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रेस ऑन अ रियल टाइम बेसिस, एट वो समय पे आपको क्या करना है। ऑल यू नीड टू डू, दिस इज अ फंटास्टिक टेक्निक, साइकोलॉजिकल साय ब्रीदिंग टेक्निक बोला जाता है इसे। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1930s, ये 1930s में डिस्कवर हुई थी। आपको क्या करना है, सिंपली जब आप इनहेल कर रहे हो तो जैसा आपको डबल इनहेल करना है एंड एक लॉन्ग एक्सहेल करना है। मतलब 2 बार आपको सांस लेनी है और पहला जो इनहेल होगा वो स्लो एंड लॉन्ग होगा, दूसरा जो होगा फास्ट होगा। डबल इनहेल करना है एंड पूरा एक ही साथ आपको फिर एक्सहेल करना है, सांस को छोड़ना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो इट्स क्वाइट इजी, बट जितना इजी ये है उतना कॉम्प्लेक्स इसका सिस्टम है। मतलब इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन समथिंग कॉल्ड वेगस नर्व। आपका एक वेगस नर्व होता है, जो वेगस नर्व ऐसा नर्व होता है बॉडी का, जो उसका जिसका जो जो नर्व बॉडी के हर पार्ट को आपके माइंड से कनेक्ट करता है। आपका बॉडी का हर एक पार्ट माइंड से जो कनेक्ट होता है वो किससे होता है, वेगस नर्व के कारण। नाउ इफ यू टेक अ कंट्रोल ऑफ द वेगस नर्व, यू रिगेन द कॉन्शियसनेस। मतलब आपको जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन फील हो रहा है, उसका कंट्रोल आप ले सकते हो सिंपली बाय एक्टिवेटिंग द वेगस नर्व। एंड वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का इजीएस्ट वे है जस्ट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू टू कंट्रोल स्ट्रेस इन अ रियल टाइम बेसिस। मतलब आप जब कंट्रोल, आपको जब स्ट्रेस फील हो रहा है, एक्चुअली एंजाइटी फील हो रही है, तो ऑल यू नीड टू डू इज डबल इनहेल एंड अ लॉन्ग एक्सहेल। इट विल हेल्प यू अलॉट इन रियल टाइम बेसिस में। आपका जो स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी हो, वो लिटरली कम हो जाएगा एंड यू विल रिगेन अ consciousness and you will able to engage with the real world. सेकंड चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें जो है हमारा जो स्ट्रेस इंडोरेंस है, मतलब स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है, वो डे बाय डे हमें बढ़ाते रहना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू नो never ever expect life to be fair. Life is unfair, and the don't expect the things from the life. And the problem is that today generation and with all the humans is we expect number of things from the life. The lesser the expectation, the more the happier you will be. The lesser the expectation, the happier you will be. Simple चीज है। तो don't expect, never ever expect in your life, and don't expect that life is fair. But the thing is, स्ट्रेस तो आएगा, स्ट्रेस इज गोइंग टू हिट यू एंड इट विल हिट यू वेरी हार्ड। सो दूसरी चीज हमें प्रिपेयर करना है
वो चीज़ है कि हमारी जो स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो डे बाय डे बढ़ती रहनी चाहिए। एंड यू कैन डू इट सिंपली बाय, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड टेक्निक, मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड इपिनेफ्रिन। Self-induced epinephrine techniques. Epinephrine is nothing but adrenaline. मोस्ट ऑफ द टाइम एड्रेनालिन से हमें जब कभी डर वगैरह लगता है तो हमें एड्रेनालिन, हम एक केमिकल है जो हमारे माइंड में आ जाता है, उसके कारण हमें डर वगैरह लगना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी। नाउ द थिंग इज, इफ यू एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, इफ यू टेक अ बाथ विद कोल्ड वाटर, दिस इज सिंपलेस्ट टूल टू एक्सपीरियंस द थ्रेशोल्ड ऑफ योर स्ट्रेस इंडोरेंस, मतलब स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी अगर आपको बढ़ानी है, all you need to do is take a bath with a cold water. Actually when you are taking a bath with a cold water, आपका जो इफिने, you get a three most important compound, that is epinephrine, dopamine and acetylcholine। ये तीनों कंपाउंड आपके न्यूरो ट्रांसमीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे जैसे आपके बढ़ते हैं, आप यू कैन एक्सपीरियंस दिस, जस्ट गो एंड ऑब्जर्व दैट, जब आप ठंडे पानी से नहाते हो तो आपकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। दैट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ इज नथिंग बट द साइन ऑफ release of the epinephrine, that is nothing but adrenaline। and at that time you can learn, आप उस समय आपको खुद को कंट्रोल करने का कोशिश कर सकते हो। एंड जैसे ही एड्रेनालिन आ रहा है, but still if you are taking a bath with the cold water, you are handling the stress, actually you are increasing the capacity of stress endurance, मतलब स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी आप बढ़ाते हो डेली अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो। तो इट इज सिंपलेस्ट टूल, जीरो कॉस्ट, इनफैक्ट निगेटिव कॉस्ट। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो, आप नेचर को भी बचाओगे, लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाओगे, अगर आपके पास हीटर है तो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा, एंड नंबर ऑफ थिंग्स विल बी यू कैन सेव। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका हेल्थ जो है, सबसे ज़्यादा हेल्थ, इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे होगा। मुझे जब पता नहीं था दिस रिसर्च एंड ऑल दिस पेपर के बारे में, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टेक अ बाथ विद द हॉट वाटर, but recently I started taking with the bath with the cold water, and trust me, it's I am experiencing huge change, dramatic change, humongous change in my emotional makeup and in my power and energy whenever it comes to engage with the real world। And it is not about staying untouched by the stress but navigating better through it। so याद रखना है कि I have already told you stress is going to hit you। तो जब स्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस बिल्कुल आएगा ही नहीं, आएगा भी तो आप अगर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको अगर फॉलो करते हो, तो स्ट्रेस अगर आ भी रहा है तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल फील दैट यू हैव अ टूल किट, योर ओन टूल किट टू डील विद द स्ट्रेस। नाउ व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, आप अगर आपके ब्रेन का ध्यान रखते हो, आपका माइंड जो का ध्यान रखते हो, जो चीजें करते हो, मैंने जो भी 7 पिलर्स बताए हैं, अगर उन पिलर में से अगर 2-3 भी आप डेली चीज, डेली बेसिस के ऊपर अगर फॉलो करना स्टार्ट करते हो, तो आप ना सिर्फ आपका मेंटल हेल्थ ही नहीं, आपका गट, दैट इज नथिंग बट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका हार्मोन कंट्रोल, आपका मेटाबॉलिक कंट्रोल, इन सारों का भी आप इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कर रहे हो। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर बॉडी। सॉरी। if you are taking care of your mind, you are indirectly taking care of all those things। तो make sure that 2 या 3 चीजें करने से, डेली अगर आप 2 या 3 चीजें मैंने जो बताई उसमें सातों के सातों करते तो फंटास्टिक, यू आर इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ लाइक नेवर बिफोर। बट अगर दो चीजें भी इन साथ नहीं करना होता है, एटलीस्ट एक भी चीज अगर आप डेली करते हो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, एंड यू विल थैंक योर सेल्फ आफ्टर सम ईयर्स, जब मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। Now that's it today for guys. Make sure that if you like this video, then like it, subscribe it, and share it. You can connect with me through the Instagram also, Siddhant Life School is my channel। You can follow me over there, and वहाँ पे मैं daily updates डालते रहता हूँ, तो you can do that। Thank you, thank you guys. Have a great evening ahead। Make sure that you follow these things, whatever I have told you। Thank you guys. Thanks a lot. Thanks for watching this.